Hello, good evening, and a very warm welcome to all my students on CBSE class 10th. I hope that आप लोग का जो वीकेंड है वो अच्छा गया हो और आप लोग एकदम रेडी हो, फुल्ली प्रिपेयर्ड हो, फुल्ली एनर्जाइज्ड हो फॉर दिस वीक. बहुत सारी पढ़ाई कवर करनी है यार, बहुत सारी पढ़ाई कवर करनी है. एंड क्लास 10th का syllabus is also something that we have to take care of. Class 9th का भी. So this week is going to be packed with, as I told you, with a lot of studies. Yes. So how is everybody doing? Hello Arya. Hello. How are you? Hi. Who else is here? All right. Arya is here, and amazing facts with Ayush. Okay. Hi. Hello. How are you? And who else is there? All right. Adya. Hello. Good evening, boys and girls. I hope that you guys have a little knowledge about this poem. जो आज हम लोग poem करने वाले हैं वो है आपके term 1 syllabus का जो one and only poem बचा हुआ है अभी तक. बाकी already सारे जो है मैंने previously cover कर दिया. I've already covered it, explanations, everything done. So this is the last poem for class 10th, and this is the last poem for the term 1. The name of the poem is Ball Poem. Very interesting poem. ठीक है, बहुत सारा symbolism है. And it tackles is a very important part of life. क्या life का part ये यहाँ पे tackle करता है कि कहीं ना कहीं while growing up we have to come to terms with the idea of loss in our lives. And how do we deal with it? That's one of the most important things that we need to learn, because अगर हम ये चीज को learn नहीं करेंगे, the idea of losing something important, precious, or someone important or someone precious. देखो, as much as I don't want to say it, but death, departure, these things are a very real part of our lives, and sometimes we have to be strong enough to accept it. So that is what this particular poem talks about. Hello Nana, how are you bacha? Hello. Hi Mashi, how are you? Interesting name. Hello Ranjita, hello. Sir, you back to Bangalore? Yes, I'm back to Bangalore. Yes, I'm absolutely back to Bangalore. Sir, today you are not looking like old one. Sir, I'm not looking like old one. अच्छा, ठीक है. Yes. Sir. Hi Aditya, hello. All right. Yes, Menti is going to happen. Menti is of course going to happen. But first we will go through the explanation. थोड़ा बहुत डिस्कस करेंगे. बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड है ही नहीं ये पोएम. You will be easily able to understand this poem. We'll discuss a few things about it. Poetic devices, literary device, कौन सी चीजें यूज हुई हैं, and then straight to Menti, of course. But knowing the poem is extremely important. All right. And let's begin. So we need to start this session. On that note, let us begin. All right. Hello Tanya, how are you? The code is 77536097. But abhi time hai, I'm going to reshare the code. Don't worry about it. 77536097 is the code. All right. Sir, read the comment properly. मैंने तो comment करा ना properly. Sir, today you are looking like old one. Acha, today I'm looking like old one. Oh, I thought I'm not looking like old one. Okay. All right. So moving on. चलो start करते हैं भाई. यहाँ पे to begin with, you can use my code. Very simple code. You know what my code is. My code is CHAT10. All right. CHAT10. Use my code to avail discounts. All right. And here my code. Very simple code. आप लोगों को बहुत easily याद हो जाएगा. CHAT10. Boys and girls, my name is Aryaman Chatterji. I am your English educator for class 9th and 10th. I have completed my graduation from Delhi University, and then I've pursued a post-graduation diploma in mass communication. I've been teaching for almost 10 years. So here I am. अच्छा, कुछ गड़बड़ दिखता है किसी भी वीडियो में, बग्स हैं या फिर कुछ इनकरेक्ट दिखता है, तो फिर हम लोग को आप बता सकते हो. You can tell us at Unacademy and also win prizes. There is a form in the description. Use that and avail your prizes. All right. Good evening Ranjita. Good evening. All right. Moving on. चलो आगे बढ़ते हैं भाई जल्दी से. Unacademy Ask a Doubt. As you boys and girls know, Unacademy Ask a Doubt is a feature which empowers you to solve your own doubts. You don't have to depend on your parents. You don't have to depend on your bada didi, bada bhaiya, chota bhaiya, friends. You can solve it on your own. Very simple steps. Ask a Doubt पे click करना है Unacademy app पे जाके. उसके बाद you have to take the picture of that particular doubt, select it, and make sure that you crop to highlight it. Make sure that you have selected that question properly, and after that choose the subject that that particular question falls under, and you will get your doubt solved within seconds. All right. Hello Sangeeta, how are you? All right.
सो मूविंग ऑन भाई, आगे बढ़ जाते हैं जल्दी से. डू नॉट पोस्ट मल्टीपल डाउट्स इन अ सिंगल इमेज. डू नॉट पोस्ट हैंड रिटन क्वेश्चंस, ब्लर्ड इमेजेस और इनकम्प्लीट क्वेश्चंस, क्योंकि ये सब अगर आप करोगे तो फिर आपका डाउट सॉल्व होने में थोड़ी सी परेशानी हो सकती है. एंड अनअकैडमी सब्सक्रिप्शंस में भाई सबसे पहले बात करते हैं अनअकैडमी प्लस सब्सक्रिप्शन की. देखो, घर बैठे स्पेंडिंग अ लिटिल बिट ऑफ योर पेरेंट्स मनी, यू कैन गेट एक्सेस टू द टॉप एजुकेटर्स ऑफ दिस कंट्री. You will be getting regular doubt solving sessions, exhaustive coverage of the syllabus, mentorship guidance, study material, practice tests, live tests, all the things that will make your student life much easier. All right, much easier. And at the same time, you will get a discount also after using my code, which is very simple. Kya hai mera code? My code is CHAT10. 12 months of subscription, which is for 15,000, is going to reduce to 13,500. 15 months of subscription, which is for 18,000, reduces to 16,200 on using my code, which is CHAT10. Now, let us talk about आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन. भाई आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन में ऐसा क्या स्पेशल है? आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन में आपको मिल जाएगा पर्सनल मेंटोरशिप, वन ऑन वन मेंटोरशिप एंड गाइडेंस, लाइव डाउट सॉल्विंग सेशंस, a lot of those things that will help you. Hello Ashmit, how are you? All right, so moving on, आपको वहां पे मिल जाएगा लाइव डाउट सॉल्विंग सेशंस, वीकली रिपोर्ट्स, पेरेंट्स कनेक्ट, स्टडी मटेरियल, all the benefits of an academy subscription alongside a discount, which is of course you're going to get if you use my code. और मेरा कोड आप लोग को अभी तक तो याद हो जाना चाहिए. It is very simple, boys and girls. It is very simple. It is CHAT10. All right, CHAT10 is my code, and this is my code. Very simple code. आप आराम से इसको use करो, and you can avail the discounts. So moving on. 1 second. All right. Yes. This is my code, and बॉयज एंड गर्ल्स, अगर अनअकैडमी ऐप पे आपको सब्सक्रिप्शन चाहिए तो बहुत ही सिंपल स्टेप्स है यार. अनअकैडमी का ऐप डाउनलोड करो, लर्नर्स ऐप. आफ्टर दैट व्हाट यू हैव टू डू इज यू हैव टू चूज अ पेमेंट मेथड, and you can choose in pay, in parts, or you can choose to pay in installments. सारे चीजें अवेलेबल हैं. आज ही अनअकैडमी एक्सपर्ट से बात करो and get yourself clear about how to solve this payment issue. आपको एक साथ देने की जरूरत नहीं. You can avail it in different ways. All right. Oh, you remember the code. All right. Hello, Yadav. How are you, bacha? Hello. All right. Hello, Google. How are you? Who's this Google, by the way? You can let me know. All right. 10% discount. Don't forget. And don't forget my code also. It is CHAT10. And if you haven't downloaded the app till now, I would strongly suggest to download it, because you can win so many prizes. An academy combat test bhi hota hai bhai every Sunday. Enroll for that also. And while enrolling, you can also win 1 crore worth of scholarship wahan pe bhi, और zero investment hai. So app download karo, figure out for yourself, and it's time to crack it. Let's go. Let us understand this chapter. उससे पहले मेरा जो दूसरा चैनल है द लास्ट इंग्लिश टीचर, उसका टेलीग्राम ग्रुप का लिंक इज राइट हियर. प्लीज enroll there, be a part of the community of telegram group, and you will get benefits of updated information about what videos are going to be there and what videos have already been there. सब links वहां पे आपको मिल जाएंगे. Alright, so let's start the ball poem. So जैसे कि मैंने आपको कहा कि यहाँ पे जो है ये जो स्टोरी है, the story is about loss and handling loss. And as kids, when we are growing up, we till the point which we haven't experienced something big that we lose in our lives, चाहे वो कोई चीज हो, चाहे वो कोई पर्सन हो, ठीक है, we don't know how to deal with it. ठीक है. So this story is about a boy and he loses a ball. देखो, बॉल से तो हम लोग सब खेलते हैं, ठीक है, बट जो पहला बॉल है आपकी लाइफ का, या फिर आपने उससे पहले अगर कोई चीज खोई नहीं हो, क्या इम्पैक्ट आता है, हाउ डू यू इवॉल्व विद दैट. दैट इज द पोएट, व्हाट इज दैट इज द मैसेज दैट द पोएट इज ट्राइंग टू कन्वे हियर. सो वील डू अ थॉरो रीड, एंड उसके बाद फिर हम लोग जो है लाइन बाय लाइन जो है स्टैंजा बाय स्टैंजा देखेंगे कि क्या बता रहे हैं पोएट. ठीक है. सो एंड बिफोर वी स्टार्ट, हेलो अनु, हाउ आर यू बच्चा? हेलो रंजन, हाउ आर यू? हेलो मोनिका. ऑल राइट, I am good because I have lots of work. Superb. So let us start with the author. All right. John Allen McAlpine Berryman. तो यहाँ पे इनका नाम सिर्फ इतना है, जॉन बेरीमैन. ठीक है. 1942 से लेके 1947 तक ही थे. He was an American poet and a scholar.
and he was a major figure in the American Poetry Society in the second half of the 20th century. तो अमेरिकन पोएट्री की कम्युनिटी के बहुत इंपॉर्टेंट मेंबर थे ये जॉन बेरीमैन. And he was considered a key figure in the confessional school of poetry. Confessional school of poetry is a style of poetry. His best known work is the Dream Song. तो ये तो हो गया हमारे ऑथर के बारे में. ठीक है. हेलो शिवांगी, गुड इवनिंग बच्चा. हेलो हेलो हेलो. ऑल राइट. नाउ मूविंग ऑन. अब जो है हम लोग इस पोएम का एक क्विक रीड थ्रू कर लेते हैं. ठीक है. स्टार्ट करते हैं. चलो आप लोग के पास भी अगर पोएम है तो भाई खोल लो अपने बुक्स में और आ जाओ, हम लोग साथ में रीड करते हैं. लेट अस रीड इट टुगेदर. ऑलराइट. So, what is the boy now who has lost his ball? What? What is he to do? I saw it go. ठीक है. Merrily bouncing down the street and then merrily over. There it is in the water. Oh, पानी में चला गया ball. No use to say, oh, there are other balls. An ultimate shaking grief fixes the boy, and he stands rigid, trembling, staring. Little boy. And no one buys a ball back. Money is external. He is learning well behind his desperate eyes the epistemology of loss, how to stand up, knowing what every man must one day know, and most known many days how to stand up. So भाई ये तो हो गई भाई रीडिंग. ठीक है. All right. लैग हो रहा है क्या? Is it lagging, boys and girls? All right. Now it's clear. ओके ओके, मूविंग ऑन. तो भाई हम लोगों ने जो है ये पोएम की जो रीड अप है वो तो पढ़ लिया है. अब जो है ये स्टैंजा बाय स्टैंजा देखते हैं कि क्या बताने की कोशिश कर रहे हैं हमारे पोएट हु इज मिस्टर बेरीमैन. चलो, सो सबसे पहले जो है लेट्स सी द फर्स्ट 5 लाइंस. व्हाट इज द बॉय नाउ हु हैज लॉस्ट हिज बॉल? व्हाट इज ही टू डू? तो जो पोएम स्टार्ट ही हो रही है वो उस पर्सपेक्टिव से हो रही है कि जो बॉय है जिसको इमेजिन कर रहे हैं पोएट, ठीक है, उसकी बॉल ऑलरेडी खो चुकी है. तो अब पोएट इज कंटेम्पलेटिंग ऑन द बिहाफ ऑफ द बॉय कि वो सोच रही है कि अब इस सिचुएशन में जहां पे बच्चे की बॉल खो चुकी है, देयर इट इज इन द वाटर. अब क्या हो गया यहाँ पे ये हो गया है. ऑल राइट. ओके, इज इट स्टिल लैगिंग बॉयज एंड गर्ल्स? इज इट स्टिल लैगिंग? Yeah, I am trying to check my network. Is it still lagging? Let me know. Oh, Naina, school is open. Superb, 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 superb. All right. All right. Okay, now it's clear. चलो ठीक है, आगे बढ़ते हैं. फिर आगे बढ़ते हैं. ठीक है. So अब यहाँ पे क्या हो रहा है? Merrily bouncing down the street and then merrily over. There it is in the water. No use to see. No use to say, oh, there are other balls. तो पहले क्या हुआ कि पहले जो है ये डिस्क्राइब किया कि जिस बॉय का बॉल खो गया है अब वो क्या करेगा. ठीक है. What is he supposed to do? He is feeling some experiences. He is feeling some feelings that he has never felt before. The feeling of loss. अब चाहे वो एक छोटी सी बॉल हो या फिर वो लाइफ में ऐसी चीज हो जो आपको बहुत प्रेशियस है. ठीक है. So yes, I am repeating. Don't worry about it. I am repeating. And boys and girls, जो मेरा वीडियो देख रहे हैं जरूर लाइक ठोक देना. ठीक है. Don't be lazy about hitting the like button. So सबसे पहले जो फर्स्ट फाइव लाइंस में हमें 2-3 चीजें पता चल रही हैं. सबसे पहले क्या पता चल रहा है कि एक बॉय है. ठीक है. पोएट ने जिस बॉय को इमेजिन किया है उसका बॉल जो है वो खो चुका है. कैसे खोया है? इट बाउंस्ड मेरिली डाउन द स्ट्रीट एंड देन पानी के अंदर जाके गिर गया. ठीक है. अब पानी के अंदर जब बॉल चला गया है तो अब ये बच्चा क्या करेगा? यहाँ पे बच्चे का जो बॉय है, he has lost something. Now it is a ball. Okay, it's a small thing, but even in case of that, it is still a loss, right? So आप लोगों ने भी कभी-कभी एक्सपीरियंस किया होगा कि आपकी कोई फेवरेट पेन या पेंसिल है या फिर फेवरेट बुक है और वो खो गई अचानक से, right? So how must you have felt? How must you have felt? Tell me in the message box. ठीक है. So all right, thank you. ठीक है. नमस्ते कावुरु. हेलो कावुरु ब्रदर्स, नमस्ते. ठीक है. नाउ मीनिंग दैट व्हाट इज हैपनिंग हियर इज दैट द बॉय इज एक्सपीरियंसिंग हिज फर्स्ट लॉस. मैं आप लोगों से जानना चाहता हूं कि कभी आप लोगों के साथ कभी ऐसा हुआ है कि कोई इंपॉर्टेंट, बहुत ही प्रेशियस चीज, आपकी बहुत ही फेवरेट कोई चीज आपसे खो गई एंड व्हाट डिड यू डू?
आप लोगों ने उस चीज से कैसे कोप अप किया? हाउ डिड यू कोप अप विद द लॉस ऑफ दैट? ऑल राइट, ऑल इज यंग डेज फीलिंग सैड, यस दैट इज ट्रू, दैट इज ट्रू। हेलो कबूर, यू आर मोस्ट वेलकम इन दिस सेशन। तो मुझे बताते रहना, मैं मैसेज बॉक्स में देखता रहूंगा। आओ इन लाइंस का एक्सप्लेनेशन देखते हैं। बिफोर दैट, लास्ट लाइन जो मैंने पढ़ा नहीं है ठीक से, मैं एक और बार बताता हूँ। नो यूज टू से ओ देर आर अदर बॉल्स, ये लाइन यहाँ पे क्यों बोली गई है बताता हूँ, सब बताता हूँ। चलो एक्सप्लेनेशन देखते हैं। The poet questions the state of the boy and what he is going to do now that he has lost the ball. Now the ball can be a symbol of losing anything precious in your life. यहाँ पे ये जो boy है, इसके लिए ये ball है, but वो कुछ भी हो सकता है. It can be some loved one in your family, okay? Unfortunate, but can be, because it's the truth of life, right? So death is the ultimate reality, and sometimes, you don't want to, but you end up losing something very special, या someone very special from your life. तो यही यहाँ पे जो है ये बॉय और ये बॉल का जो लॉस है, ये एक्सप्लेन यहाँ पे ये कर रहा है, ठीक है। एंड व्हाट डिड द पोएट सी? द पोएट एक्चुअली सॉ द बॉल बाउंसिंग डाउन द स्ट्रीट एंड इनटू द वाटर। अब ये असली एक्सपीरियंस है या नहीं, इसमें हमें इतनी क्लैरिटी नहीं है, बट जहां तक मुझे लगता है इट इज एन इमेजिनेशन, ठीक है, इट इज एन इमेजिनेशन। सो अमेजिंग फैक्ट विद आयुषी सिंह, मेरी डायरी, ठीक है, मेरे नोट्स। तो मोनिका, आप लोगों को कैसा लगा? सर माय गिफ्ट, शिवांगी सिंह माय गिफ्ट, ऑल राइट सर। I not sub for pass but I am sad because I lost my one friend, जैसे कि आपने बताया। तो कुछ लोगों की डायरी हो गई, कुछ लोगों का नोट्स हो गया, कुछ हमारे एक बच्चे ने यहाँ पे अपना एक फ्रेंड भी खोया है। सो व्हेन यू लूज समथिंग द फर्स्ट टाइम, ठीक है, तब आपके पास जो है एक ऐसा एक्सपीरियंस आता है जो आपने पहले कभी एक्सपीरियंस किया ही नहीं है। द सेंस ऑफ लॉस will make you much stronger eventually, but at that time you are feeling at a loss. It is something which is very painful, and that is what is the boy's state of mind right now, ठीक है। And there is no use in saying that there are other balls, right? There is no use, like there is no use in saying that there are other more nice people in your life who you have not lost till now. ऐसा तो हो नहीं सकता ना। अगर आपने किसी को लूज किया या कोई बहुत ही प्रेशियस चीज लूज की है, तो क्या होगा वहां पे? आप उसको दूसरी चीज से कंपेयर करके रिप्लेस नहीं कर सकते हो, राइट? सो दैट इज व्हाट दैट पर्टिकुलर लाइन इज सेइंग। द लास्ट लाइन हियर, यहाँ पे ये जो लाइन है, नो यूज टू से, ये देखो, ये जो है नो यूज टू से ओ देयर आर अदर बॉल्स, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यही है कि देयर इज नो यूज इन सेइंग दैट देयर आर अदर बॉल्स एज द बॉय शुड नॉट वरी बिकॉज ही विल वरी। उसको जो लॉस हुआ है वो चीज रिप्लेस नहीं हो सकती दूसरी बॉल्स के साथ। या अगर आपने कोई इंपॉर्टेंट या प्रेशियस इंसान को खोया है, उसका जो लॉस है वो किसी और इंसान कोई और इंसान फिल नहीं कर सकता, ठीक है। सो दैट इज व्हाट इज हैपनिंग राइट नाउ, ऑल राइट सर। व्हाट डज द थर्ड लाइन मीन? ऑल राइट कवारू, द थर्ड लाइन, चलो। मेरिली बाउंसिंग डाउन द स्ट्रीट एंड देन, तो यहाँ पे जो है बॉल जैसे खोई है उसका डिस्क्रिप्शन है कि बॉल जो है वो शायद बच्चे के हाथ से छूट गया है और वो बाउंस करते 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 कहां चला गया? पानी के अंदर चला गया। सो दैट इज व्हाट इज बीइंग डिस्क्राइब्ड हियर, ऑलराइट। सो क्लैरिटी है? कुछ डाउट है तो मुझे अभी अभी पूछ लो, ठीक है। इफ एनी अदर डाउट प्लीज आस्क मी, अदरवाइज आई कैन मूव ऑन। Very simple poem. It is basically in a crux trying to tell you that how is it important? It's very important to experience losses in your life so that you get used to it, because loss is a reality. It's a fact. You cannot run from it. कई बार आपसे कुछ चीजें खोएंगी, कई बार आपसे लाइफ में कुछ लोग बिछड़ के निकल जाएंगे, आपको यूज टू होना पड़ेगा। अगर आप नहीं होगे तो बहुत प्रॉब्लम हो जाएगा, बिकॉज आप वीक हो जाओगे उस टाइम में एंड यू विल फील अ लॉट ऑफ पेन, ठीक है। तो इससे अच्छा है कि ये छोटे छोटे एक्सपीरियंस, मान लो एक बॉल ही है, उसी से अगर आपको सेंस ऑफ लॉस का मीनिंग समझ में आ जाता है तो ज्यादा बेटर है, बिकॉज आगे जाके लाइफ में लॉस इज बाउंड टू हैपन, ऑलराइट, बट इट्स ओके, वी आर स्ट्रॉन्ग पीपल, वी विल डील विद इट, ऑलराइट। चलो मूविंग ऑन। मेरिली मतलब खुश होके। तो यहाँ पे ऑल्दो बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट रंजिता आपने पॉइंट आउट किया, मैं बताऊंगा बाद में पोएटिक डिवाइस में इसका क्या रेलेवेंस है। मेरिली मतलब हैप्पीली, ठीक है। तो बॉल को मेरिली बताया गया है, तो ऑब्वियसली बॉल इज नॉट अ लिविंग ऑब्जेक्ट, बट यहाँ पे एक लिविंग इंसान के लिए जो वर्ड यूज करते हैं वो यहाँ पे यूज किया है। सो इट्स अ पोएटिक डिवाइस, ऑलराइट। चलो आगे बढ़ते हैं। An ultimate shaking grief fixes the boy as he stands rigid, trembling, staring down all his young days into the harbor where his ball went. अब यहाँ पे हमें पता चल रहा है कि क्या एक्सपीरियंस हो रहा है बच्चे को, इमीडिएटली क्या रिएक्शंस आ रहे हैं, व्हाट इज हैपनिंग? ही इज स्टैंडिंग रिजिड, ट्रेम्बलिंग, स्टेयरिंग डाउन, दुख फील कर रहा है बॉय,
और कहाँ चला गया बॉल? द बॉल हैज गॉन इनटू अ हार्बर। वो किसी गार्डन के पानी या फिर किसी गटर में नहीं है, वो सीधे हार्बर में चला गया। तो वो बॉय वहां पे जा भी नहीं सकता है, राइट? हार्बर में आप जंप करोगे तो आप ड्राउन भी हो सकते हो, तो इतना बड़ा रिस्क वो बॉय ले नहीं सकता है। बॉल जा चुका है एंड हिज बॉल इज गॉन इनटू द हार्बर। आई वुड नॉट इंट्रूड हिम। यहाँ पे पोएट बोल रहे हैं कि मैं इंटरफेयर नहीं करूंगा, मैं सिंपथाइज नहीं करूंगा बॉय से। व्हाई? अ टाइम अनदर बॉल इज वर्थलेस नाउ। बिकॉज यहाँ पे जो बॉय को जो एक्सपीरियंस मिल रहा है लॉस का, वो उसके लिए इंपॉर्टेंट है। सो द पोएट डज नॉट वांट टू come and give him false hope or comfort, because he wants him to deal with the experience of loss and grow from it. All right. All right. Today is Menti. Yes, बिल्कुल personification, बिल्कुल सही जवाब. Yes, harbor. Harbor is a place, शिवांगी. Harbor is a place जहां पे ships आके रुकते हैं. It is that spot जहां पे जहां से जहां से ओशन शुरू होता है और जहां पे लैंड और ओशन जो है एक जगह पे आके जो मिलते हैं, जहां पे शिप्स आके डॉक करते हैं. दैट इज द प्लेस विच इज कॉल्ड अ हार्बर. सो यहाँ पे जो है वो हार्बर में चला गया है, वो पानी के अंदर बेसिकली चला गया है बॉल, एंड दैट इज व्हाई द बॉय इज फीलिंग, ही इज स्टैंडिंग रिजिड. एकदम वो स्टिफ हो चुका है क्योंकि उसको गुस्सा भी आ रहा है, लॉस है, ट्रेम्बल कर रहा है वो दुख से और गुस्से से, एंड ही इज स्टेयरिंग डाउन एट द बॉल बिकॉज ही माइट still be able to see that ball drowning away, going into the harbor. ठीक है? और कोई दूसरा बॉल, बॉल का जो प्राइस है वो क्या है? एक डाइम ही है, इट्स वन डाइम. ठीक है? बट इट्स वर्थलेस नाउ बिकॉज वो बॉल तो नहीं आ सकता है वापस यहाँ पे. ठीक है? तो यहाँ पे बहुत बड़ा सिंबोलिज्म का यूजेज है. ठीक है? आप समझना आराम से कि ये बॉल जो है, इट इज अ सिंबल ऑफ प्रेशियस थिंग्स इन योर लाइफ. जैसे कि मैंने आपसे पूछा, यस इन अ वे, यस स्पोर्ट. ऑलराइट, सो स्टार्ट करो मेंटी. नहीं 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 आयुष, अभी टाइम है बच्चा. सर ऐसे दूसरे आ जाएगी, बट उसको जो इमोशन जॉइन है उसके साथ वो नहीं आ सकती. बिल्कुल सही बात अनु, बिल्कुल सही बात. यस आई रिमेंबर यू. ऑलराइट, चलो मूविंग ऑन. लेट अस सी. सो अ डीप सैडनेस कम्स ओवर द बॉय, अल्टीमेट शेकिंग ग्रीफ एज ही स्टैंड स्टिफ. क्यों? क्योंकि जब दुखी है और उसको कुछ समझ में नहीं आ रहा है क्या करूं, बॉल को वो रेस्क्यू नहीं कर सकता, वो हार्बर में जा चुका है, तो वो बहुत ही दुखी हो रहा है. एंड ही शेकिंग, ही इज ट्रेम्बलिंग विद फियर, विद एंगर एंड विद सैडनेस. ऑलराइट, एंड ही इज स्टेयरिंग एट द बॉल. एज द बॉल गोज इनटू द हार्बर, ही रिमेंबर्स द डेज व्हेन ही वाज यंगर. ठीक है? अब जब बॉल जा रहा है तो उसको याद आ रहा है उसके यंग डेज. द पोएट चोज नॉट टू इंट्रूड द बॉय एंड लेट हिम बी. व्हाई? गेटिंग अनदर बॉल वुड बी वर्थलेस एज इट इज नॉट द सेम बॉल. जैसे कि मैंने आपको बता दिया, ये बॉल रिप्लेस हो सकता है, बट उसके साथ जो अटैच मेमोरीज हैं, उसके साथ जो अटैच इमोशंस हैं, वो यहाँ पे रिप्लेस नहीं हो सकते. ऑलराइट, सो लेट अस मूव ऑन. डाइम इज बेसिकली अ वैल्यू ऑफ करेंसी. ठीक है? डाइम का मतलब होता है करेंसी, एक तरह का करेंसी होता है. ठीक है? सो दैट इज व्हाट एक डाइम इज इक्वल टू बेसिकली 10 वैल्यू ऑफ दैट पर्टिकुलर करेंसी. तो यहाँ पे डाइम मतलब प्रोबेबली होगा 10 सेंट्स, जहां तक मुझे लग रहा है, बिकॉज हमारे जो ये है क्या बोलते हैं ऑथर है, वो अमेरिकन है, तो सेंट्स ही होगा. सो दैट्स व्हाट आई एम अज्यूमिंग. सो 10 सेंट्स यू कैन सी. ठीक है? नाउ ही सेंसेस फर्स्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी. ठीक है? ही सेंसेस फर्स्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी इन अ वर्ल्ड ऑफ पोजेशंस. तो वर्ल्ड ऑफ पोजेशंस यहाँ पे, इसका मतलब जो है, ये वर्ल्ड ऑफ पोजेशन जो यहाँ पे है, इसका मतलब है मटीरियलिस्टिक वर्ल्ड, द मटीरियल वर्ल्ड. व्हाट इज द मटीरियल वर्ल्ड? जो आपके आसपास दिखता है, हमारे घर है मटीरियल चीजों के, गाड़ी है, पैसा है, दिस काइंड ऑफ थिंग्स मेक अप द मटीरियल वर्ल्ड, राइट? सो दैट इज व्हाट इन अ वर्ल्ड ऑफ पोजेशन मीन्स. ऑलराइट, सो moving on. All right. In a world of possessions, people will take balls. Balls will be lost anyways, little boy. अब यहाँ पे जो है, यहाँ पे एक तरह से दो बातें कही जा रही है. क्या दो बातें कही जा रही है यहाँ पे? एक तो बॉल, जो बॉल खोया है उसके बारे में भी कहा जा रहा है, दैट इन अ वर्ल्ड ऑफ पोजेशन, मटीरियलिस्टिक वर्ल्ड में, पीपल विल टेक बॉल्स. हो सकता है कि आपसे कोई आपका प्रेशियस चीज छीन भी ले. ठीक है? इसका सिंबोलिज्म यहाँ पे है. ठीक है? सो इट कैन बी अ बॉल, बट इट कैन बी समथिंग दैट इज वेरी क्लोज टू योर हार्ट, वेरी प्रेशियस. मे बी अ पर्सन, कोई दूसरा बंदा या बंदी, कोई आके मतलब आपकी लाइफ में प्रॉब्लम क्रिएट करके उस पर्सन या उस थिंग को हटा सकता है आपकी लाइफ से. Balls will be lost, और जो फाइनल लॉस है ड्यू टू डेथ और ड्यू टू समथिंग गेटिंग लॉस्ट, दैट इज इनएविटेबल. ठीक है? अगर यहाँ पे दुनिया में हम लोग एग्जिस्ट करते हैं तो खो जाना इज अ वेरी सिंपल फैक्ट ऑफ लाइफ, एंड डेथ इज ऑल्सो वेरी रियल एंड सिंपल फैक्ट ऑफ लाइफ. इट्स द अल्टीमेट फैक्ट ऑफ लाइफ. अनफॉर्चुनेट, बट दैट इज द फैक्ट ऑफ लाइफ.
ठीक है, तो वो बताए एक तरह से, यू नो, द पोएट इज ट्राइंग टू से टू द बॉय बट नॉट सेइंग इट, द पोएट इज सेइंग टू अस कि वो ये बॉय को ये बता सकते थे। एंड नो वन बायज अ बॉल बैक, और ऑफ कोर्स एक बार जो चीज जा चुकी है वो वापस कोई खरीद नहीं सकता है। दैट हैप्पीनेस विल नेवर बी रिप्लेस्ड। ऑलराइट, यस, जॉन बेरीमैन इज द नेम ऑफ द पोएट। ऑलराइट, so author name is John Berryman. Absolutely correct, Himanshu Raj. Good evening bacha. Hello Akrar, what is your name? Akar, Akrakr. Oh my god, very difficult pronunciation. All right, and no one buys a ball back. Money is external. यहाँ पे पोइट क्या बता रहे कि मनी जो है ये मटीरियलिस्टिक वर्ल्ड का पार्ट है, इट इज एन एक्सटर्नल थिंग। जो हम लोग ने हमेशा सुना है ना, एक कहावत आपने सुनी होगी दैट मनी कैन नॉट बाय लव, मनी कैन नॉट बाय हैप्पीनेस, मनी कैन बाय यू थिंग्स बट मनी कैन नेवर बाय यू लव एंड हैप्पीनेस। यहाँ पे वही एक तरह से वो बोलने की कोशिश कर रहे हैं यहाँ पे पोइट। He is learning well behind his desperate eyes. चलो इसका एक्सप्लेनेशन जल्दी से देख लेते हैं। अब क्या होता है कि जब बॉय को ये बात, यू नो, when it strikes him the reality of the fact that he has lost the ball, ठीक है, तब उसको एक सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी फील होती है। He tries to own up to the situation. Alright, तो own up to the situation वो कैसे करता है भाई? वो रियलाइज करता है कि जो जा चुका है, दिल पे पत्थर रखो, आगे बढ़ जाओ। ठीक है, इन अ वर्ल्ड ऑफ possessions he learns that people will take balls, metaphor for possessions or important things in life that we care about. ठीक है, there will be other people who might snatch things away from you, who might snatch people that you love away from you. ठीक है, even you know people might just pass away and not be a part of your life anymore. तो उसके लिए prepared होना बहुत ज्यादा जरूरी है. You have to be strong mentally. That is the most important thing. And they will also be lost all the time. Now the boy also learns that these possessions cannot be bought back by money. Money cannot buy happiness, money cannot buy love, money can buy you things. That is the main point here. ठीक है, the epistemology of loss. He realizes first responsibility. जी हाँ, बिल्कुल बिल्कुल सही जवाब। ठीक है सर, अभिषेक सर आपने मुझे बुलाया, मैं आ गया। क्या बात है अभिषेक? ऑल राइट, गुड इवनिंग अभिषेक। ऑल राइट, सो moving on, epistemology. Yes, epistemology means knowledge. ठीक है, the knowledge of anything is what basically epistemology means. तो अब क्या हो गया, अब ये लॉस के साथ बच्चे को, इस बॉय को ये फील हुआ है कि he has understood the knowledge of losing something. ठीक है, how to stand up, knowing that every man must one day know and most know many days how to stand up. तो यहाँ पे क्या, the poet is saying that हम सब, every person has to one day or the other face the feeling of losing something. ठीक है, so this boy now with the knowledge of that experience, जो ये बॉल उससे खो गया, ठीक है, वो दर्द उसको हुआ, वो दुख उसको हुआ, तो अब उसको ये नॉलेज है इस पर्टिकुलर लॉस का कि यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे मुझे दुख क्यों हो रहा है, बिकॉज यू लॉस्ट समथिंग। ठीक है, नाउ विद दिस नॉलेज, ये नॉलेज जो है उसके आगे के लिए काम आएगा। क्यों? क्योंकि आगे अब अगर ऐसा कभी आया सिचुएशन जहां पे he loses something in his life which is precious, he will not feel the same amount of pain, the same amount of sadness, the same amount of sorrow, because he's already had that epistemology or knowledge of that loss that he has faced with the loss of this particular ball. ठीक है बच्चा, शिवांगी, epistemology means knowledge. ठीक है, the knowledge and the knowledge that he has gathered after losing this ball. जैसे कि आपने भी, जैसे कि आपके साथ भी हुआ होगा कि जब फर्स्ट टाइम आपने कुछ लूज किया होगा, ठीक है, आपकी जो फेवरेट टॉय है या आपकी फेवरेट साइकिल है, कुछ बच्चों की, मैं ऐसे एग्जांपल दे रहा हूँ, ठीक है, या फिर आपका फेवरेट नोटबुक, वो खोने के बाद जो दर्द आपको हुआ होगा वो बहुत ज्यादा होगा, बट उसके बाद अगर दोबारा कोई चीज खोती है तो फिर होता है दुख, बट उतनी बुरी तरह से फीलिंग्स नहीं हैम्पर होती है, उतना बुरा पेन नहीं होता, उतना बुरा सैडनेस नहीं होता है द सेकेंड टाइम, बिकॉज यू ऑलरेडी नो व्हाट इट फील्स लाइक बेसिकली। ऑलराइट, सो चलो आगे बढ़ते हैं। अब इसका जो है मीनिंग फटाफट देख लेते हैं। द नॉलेज ऑफ लूजिंग समथिंग, एपिस्टेमोलॉजी मींस नॉलेज, जैसे कि मैं बार बार बोल चुका हूं। ठीक है, द नॉलेज ऑफ लूजिंग समथिंग एंड लर्निंग हाउ टू स्टैंड अप। ठीक है, उस लॉस से कोप कैसे करना, दैट इज द होल, दैट इज द जिस्ट ऑफ दिस पर्टिकुलर पोएम। ऑलराइट, and learning how to stand up when you are weak must be learned by everyone, because everyone will face losses in their lives. ठीक है, कभी बचपन में हो जाएगा, कभी बड़े होके होगा, लेकिन होगा जरूर। यू कैन नॉट एस्केप इट, इट्स अ रियलिटी ऑफ आवर लाइफ्स, इट इज व्हाट लाइफ इज ऑल अबाउट, इट्स अबाउट गेन्स एंड लॉसेस, राइट? एंड मोस्ट पीपल विल लर्न मोर देन वन वे टू स्टैंड बैक फ्रॉम सच सर्कमस्टांसेस। और कई लोग के बहुत ज्यादा एक्सपीरियंसेस होंगे
नो ऑफ लूजिंग थिंग्स, तो वो उस हिसाब से स्ट्रांग बन जाएंगे, राइट? सो बेसिकली सबको एक ना एक दिन ये लॉस एक्सपीरियंस करने का जो ये जो फीलिंग है, इसको समझना पड़ेगा ही, बिकॉज ये आएगा ही जिंदगी में, ठीक है? इट्स इनएविटेबल। ऑल राइट, मूविंग ऑन। चलो, पर्सोनिफिकेशन, चलो जल्दी से देख लेते हैं। लिटरेरी डिवाइसेस, पर्सोनिफिकेशन इज अ फिगर ऑफ स्पीच विच शोज एट्रीब्यूशन ऑफ अ पर्सनल नेचर और ह्यूमन कैरेक्टरिस्टिक। जैसे कि मुझसे रंजिता ने आई थिंक पूछा था, क्या पूछा था रंजिता ने पूछा था, या जिसने पूछा था वो मुझे बता देना, क्योंकि हो सकता है मैं गलत नाम ले रहा हूं। बॉल मेरिली बाउंसिंग डाउन द स्ट्रीट, तो भाई बॉल इज नॉट अ लिविंग थिंग, राइट? बट यहाँ पे मेरिली, द वर्ड मेरिली विच इज बीइंग यूज्ड, इट इज अ ह्यूमन ट्रेट, इट इज द ह्यूमन कैरेक्टरिस्टिक। मेरिली का मतलब होता है वेरी वेरी जॉयसली, जॉयफुली, ठीक है? तो यहाँ पे बॉल को पर्सोनिफाई किया है और यहाँ पे पर्सोनिफिकेशन डिवाइस का यूज किया है। मेरी मीन्स हैप्पी, इट्स अ ह्यूमन कैरेक्टरिस्टिक विच इज गिवन टू द बॉल, वेरी सिंपल, ठीक है? ऑल राइट, मूविंग ऑन। मेरिली मीन्स हैप्पीली बच्चा, इन अ जॉयफुल मैनर, ठीक है? नाउ मेटाफर्स का तो यूज यहाँ पे पूरा भर भर के किया गया है, कहाँ किया गया है, चलो जल्दी से देख लेते हैं, ठीक है? इट इज अ लिटरेरी डिवाइस which a word or a phrase is symbolically applied to things which are not literally applicable। तो एक सेंटेंस से कुछ और मीनिंग की तरफ इशारा करना, that is what metaphor means, ठीक है? In the poem, the poet says, balls will be lost always. Balls here symbolizes possession which we lose. Now it can be people, it can be things, it is the valuable, the precious possessions of our life। तो कोई भी चीज भी हो सकता है आपकी गाड़ी हो, ठीक है? फ्लड में गाड़ी डूब गया, चला गया, ठीक है? कई लोगों ने ये भी एक्सपीरियंस किया होगा लाइफ में, राइट? या फिर किसी का अपना भाई, किसी का पेरेंट, यू नो, द लॉस ऑफ समवन्स फैमिली मेंबर, वेरी क्लोज वन, वेरी लव्ड वन। तो ये बॉल्स जो है, बॉल्स विल बी लॉस्ट ऑलवेज, दे आर सिंबॉलिकली also showing us that it can be a loss of something which is precious to us। तो ये हो गया आपका मेटाफर यहाँ पे, ठीक है? सो इट ऑल्सो रेफर्स टू चाइल्डहुड विच इफ लॉस नेवर कम्स बैक। तो चाइल्डहुड एक बार जब निकल जाता है तो आप दोबारा नहीं वहां पे जा सकते हो, ये भी यहाँ पे मेटाफर का यूजेज है, ठीक है? नाउ मूविंग ऑन, चलो अब यहाँ पे जो तीसरा लिटरेरी डिवाइस है वो है अपोस्ट्रोफ। व्हाट इज एन अपोस्ट्रोफ? अपोस्ट्रोफ बेसिकली एक ऐसा डिवाइस होता है जिसको पोएट यूज कर रहे हैं यहाँ पे टू टू एड्रेस अ पर्सन हु इज आइदर डेड और नॉट फिजिकली प्रेजेंट। तो अब यहाँ पे देखो एक चीज समझने की जरूरत है। यहाँ पे बॉल विल बी लॉस्ट, लिटिल बॉय, तो ये जो लिटिल बॉय है ये एक्चुअली ही इज अ फिगमेंट ऑफ पोएट्स इमेजिनेशन। पोएट ने इमेजिन किया है ये पूरा सिनेरियो, ठीक है? सो द बॉय एक्चुअली डज नॉट एग्जिस्ट, द बॉय इज नॉट फिजिकली प्रेजेंट, इवन इफ ही एग्जिस्टेड, अगर पहले कभी देखा होगा उस समय उन्होंने ये पोएम नहीं लिखा था, उन्होंने बाद में लिखा है। एंड यू नो ही मस्ट हैव इमेजिन्ड हिमसेल्फ टू बी एट दैट प्लेस वेयर द बॉल वाज बीइंग लॉस्ट, बट एक्चुअली द बॉय इज नॉट फिजिकली इन प्रॉक्सिमिटी विद द पोएट। तो सिंपल सी बात है, यहाँ पे एक ही चीज आपको समझने की जरूरत है कि ये जो बॉय जिसके बारे में पोएट बात कर रहे हैं वो पोएट के पास नहीं है, ठीक है? बट पोएट इज स्टिल रेफरिंग टू इट, ठीक है? सो दैट इज व्हाट अपोस्ट्रोफ मींस, ठीक है? चलो अब बढ़ते हैं आगे। रेपिटेशन, भाई रेपिटेशन यहाँ पे बार बार हुआ है, कौन सा वर्ड? व्हाट का। व्हाट इज ही टू डू। और रेपिटेशन क्यों देते हैं? रेपिटेशन इसलिए देते हैं ताकि किसी एक पर्टिकुलर पॉइंट पे स्ट्रेस कर पाए, तो रेपिटेशन का भी यहाँ पे इस्तेमाल हुआ है, ठीक है? ऑल राइट, आई लॉस्ट माई थिंग्स इन माई लाइफ, करेक्ट। तो जैसे अंतर्यामी, आपको पता होगा कि कई बार जो है ऐसे लॉसेस होते हैं और कैसे कोप अप करना चाहिए, ये पोएम बेसिकली उसी के बारे में है। That I've lost nothing in my life. Abhishek, that is a great thing. You are a lucky person, but one day or the other you will lose something or the other, and then you will feel that experience of losing something, ठीक है? और alliteration, alliteration आपको पता है क्या होता है? एक ही लाइन में similar sounding words जिनका साउंड जो है वो सिमिलर होता है। तो who has lost his ball, तो has, who, his, यहाँ पे what is he to do, what, ठीक है? No one buys back a ball, तो buys back a ball। The deep and dark, the, ठीक है? Floor of harbor, move my mind and my heart, move my mind, the sound of m, move my mind। So यहाँ पे alliteration का जो भी usage है इन lines में, इन particular lines में है जहां पे आपको ये alliteration का poetic device दिख रहा है, ठीक है? All right, कोई I lost my selfie, देखो अश्मित जो है उसका एक सेल्फी खो गया, ठीक है? So the deep and dark floors of harbor, move my mind and my heart, move with all that move me।
तो एक ही लाइन में जो है एम जो साउंड है वो कितनी बार आया है, तो दैट इज व्हाट अलिट्रेशन इज. एंड अनदर वन विच इज एनजैम्बमेंट. ठीक है बच्चों, जिन लोगों ने नहीं सुना है, फर्स्ट टाइम सुन रहे हो, डोंट गेट स्कैर्ड अबाउट इट. इट्स अ लिटरेरी टूल विच बेसिकली मीन्स कि एक लाइन है, एक स्टैंजा का जो एक लाइन है वो विदाउट कंप्लीटिंग इट्स मीनिंग खत्म, वहां पे फुल स्टॉप नहीं आना है बेसिकली. ठीक है, तो किसी भी ऐसा लाइन, अगर कोई भी ऐसा लाइन जो इनकम्प्लीट सा साउंड करता है और जहां पे जो है ऐसा लग रहा है कि एक लाइन जो है वो पूरा खत्म नहीं हुआ है बट लाइन जो है वो खत्म हो गया, समझ रहे हो मैं क्या बोल रहा हूँ. जैसे कि यहाँ पे आई सॉ इट गो मेरिली डाउन द स्ट्रीट एंड देन, तो एंड देन के आगे आपको लगेगा ना कि कुछ आना चाहिए, ठीक है, बट वहां पे कुछ भी नहीं है, वो लाइन वहीं पे खत्म हो जाना है, बट द मीनिंग इज नॉट finishing in that line. So that's what enjambment means. So I saw it go merrily down the street and then. ठीक है, तो this is where enjambment has been used. All right. Sir, Naina is saying I lose one thing every day. Oh my God, क्या आपका तो काफी एक्सपीरियंस हो गया होगा. Sir, now again give a summary of the whole chapter. बच्चा again summary नहीं दे पाऊंगा गीता. I think अभी मैंने पूरा का पूरा जो है एक्सप्लेनेशन दिया है. आप एक काम करना, थोड़ा सा स्क्रॉल बैक करके अपने वीडियो को फिर से देख लेना, आपको पूरी क्लैरिटी यहाँ पे मिल जाएगी. ठीक है, एक जिस्ट बता दूंगा. एंड सिंबोलिज्म, सिंबोलिज्म क्या होता है, जैसे कि मैंने आपको बताया, मेटाफोर एंड सिंबोलिज्म आर काइंड ऑफ सिमिलर. एक तरह से एक लाइन में एक कुछ लिटरल मीनिंग कुछ और है और सिंबॉलिक मीनिंग कुछ और है. इट इज द यूज ऑफ सिंबल्स ऑल्सो, और सिंबल्स का यूज होता है, ठीक है, टू रिप्रेजेंट आइडियाज और क्वालिटी. अब यहाँ पे जो है इस पर्टिकुलर पोएम में जो बॉल है, इट इज अ सिंबल ऑफ childhood, which is if one it's gone it never comes back. And possessions it can be things or people. तो एक ये जो वर्ड है ये बॉल, जो कि लिटरली एक बॉल ही है, बट एज अ सिंबल इट ऑल्सो रिप्रेजेंट्स द चाइल्डहुड, जो कि एक बार चला गया तो वापस नहीं आता, और पोजेशंस जो खो जाए तो बहुत लॉस का फीलिंग होता है. ठीक है, एंड even the father of the poet, it could be the father of the poet also, it could be the father of the poet also. All right, okay, मूविंग ऑन. अच्छा भाई, अब हम लोग का जो है खत्म हो गया है ये पोएम का एक्सप्लेनेशन. मैं आपको बेसिक जिस्ट जो है वो बताता हूँ, और तब तक जो है मेंटी कोड यहाँ पे मैं शेयर कर रहा हूँ. जल्दी से आ जाओ सब लोग मेंटी पे. ठीक है, आई एम शेयरिंग इट हियर. 7753 6097 6097 7753 6097 is the Menti code. All right. Now I'm going to tuition. Please give permission, sir. Okay, Shivangi, go to the tuition, bacha. See you on the other sessions. All right. चलो, moving on, moving on. नैना is saying नैना के पेन्स हमेशा खो जाते हैं. ठीक है. So चलो जल्दी से मेरे बच्चों मेंटी पे आ जाओ, मेंटी पे आ जाओ. ठीक है. And let us start this मेंटी. It's going to be very very interesting. 7753 6097 is the Menti code. All right. I would expect all of you students to quickly join the Menti now, and the Menti is going to be a quick revision of this particular chapter. So jaldi se jo hai फटाफट हम लोग we will go through this. I'm going to give you 2 minutes. आ जाओ जल्दी से Menti में आ जाओ quickly. 77536097 is the Menti code. All right. All right. Thank you, Shivangi. Yes. So you are the cake. All right. Hello, Azam. How are you, bacha? Jaldi se aa jao. Come on, quickly. I want you guys to join quickly. Not too much time should be wasted on this. Menti.com pe jao and put this code, which is 77536097. Very simple code. All you have to do is just put the code and you will be on there. 77536097. All right. So आ जाओ जल्दी से आ जाओ. कम ऑन, लेट अस स्टार्ट दिस मेंटी क्विक क्विक क्विक, बिकॉज अब 6 बजे जो है आई विल बी सीइंग यू गाइस एट द चैनल सीबीएसई क्लास 9th. ठीक है, और आज हम लोग करने वाले हैं पास्ट टेंस कंप्लीट कर देंगे. ठीक है, तो मेरे क्लास 9th के बच्चे जो है, जो अगर सुन रहे बाय एनी चांस, आ जाना, जरूर से आ जाना एट 6 PM sharp. आई सी यू देयर. ऑल राइट, 1 more minute and we start the मेंटी. जल्दी से आ जाओ बच्चा पार्टी. कम ऑन क्विकली. 1 more minute and we will start the Menti. I don't want to waste time anymore. Jaldi se, looking for a few more students. Come on, boys and girls. Jaldi se aap, yes. I'm going to start. Don't worry. I will start very soon. All right. I'm just waiting for 20 people. The moment it hits 20, abhi 19 dikh raha hai. Jaldi se apne friends ko bol do. ठीक है? I'll have a sip of water till then, and तब तक आप अपने friends को बुला सकते हो. जल्दी से tell your friends to join and we will start. 30 seconds left. All right. I'll have a sip of water till then. All right. बिल्कुल बिल्कुल शुरुआत होने वाली है. बिल्कुल शुरुआत होने वाली है. All right. I can still see 19 people. All right.
10 seconds. 10 seconds. And all right. 10 seconds. 9, 8, 7, 6. All right. 20 हो गए. 5, 4, 3, 2, and 1. Here we go. Chalo, all the best. All the best, boys and girls. जल्दी से खेलते हैं. Who is the poet of the ball poem? Who is the poet of the ball poem? बहुत simple question है. Leslie Norris, John Berryman, Carolyn Wells और Robert Frost. What do you guys think? जल्दी से जवाब दो, जल्दी से जवाब दो. ये तो बहुत ही simple question है, बहुत ही simple question है. And the time is up. 18 people have given the correct answer. Superb, superb. All right. So you are becoming popular on Unacademy. I guess. I hope so. I'll have to become popular if I have to be a part of this company. So yes. All right. Azam is at number 1. Vanshika is at number 2. Neil is at number 3. Tanya is at 4. Khushi 5. Arya is at number 6. Okay. Naina is at 7. Abhishek is at 8. Bao is at 9. And I lost myself is at number 10. Ye kaun hai? I lost myself. Who is I lost myself? All right. Chalo, moving on. Moving on. Agla prashna. Chalo. Let's see what the next question says. What is the boy playing with? What is the boy playing with? Is he playing with a bat, a ball, or a hockey stick? इससे easy तो कोई question ही नहीं हो सकता है. Easiest question. Easiest question. चलो जल्दी से सारे बच्चे जवाब दे दो इसका. जल्दी से सारे दे दो. Yes, very easy question. Absolutely correct. And the time is about to be up. 3, 2, 1, and time's up. Let us see the all right. 20 out of 20 people have given the correct answer. 20 out of 20 people have given the correct answer, and it is of course ball, but ball is a symbol also here. Ball is symbolic of what? Childhood, lost childhood, and possessions, personal possessions, precious, very precious possessions. Azam is at still at number 1. Vanshika is at 2. Arya has climbed up to number 3. Tanya is at number 4. Naina is at 5. Bao is at 6. Abhishek is at 7. I lost myself is at number 8. Himanshu is at number 9. And Adya is at number 10. All right. चलो आगे बढ़ते हैं. आगे बढ़ते हैं. Question number 3. चलो जी आगे देखते हैं. Here comes the next question. Where does the ball go? Where does the ball go? कहाँ जाता है ball? Drain, well, house or water? Does it go into the drain? Does it go into a well? Does it go into a house or does it go into the water? What do you guys think? Again, easy question. This is the reinforcement exercise. I hope that आप लोगों को इसके बाद ये poem जो है पूरा का पूरा crystal clear हो जाएगा. Time is up. Votes are in and let us see. Water, yes. यहाँ पे बच्चे कंफ्यूज हो गए. 5 people said drain. No, drain is not the correct answer. It went into the harbor, right? It went into the harbor. And poem में एक लाइन में ये पानी water का word use हुआ है, so that is why I put it here. All right, 15 people have given the correct answer. ओहो आर्या ये कैसे गलत कर दिया आपने? ये तो बहुत easy था. This was very easy. All right. Anyways, moving on. Moving on. All right. The next question. Okay. Azam is at 1. Bao is at 2. Vanshika is at 3. Abhishek Kumar is at 4. Adya is at 5. Himanshu 6. Alifya is at 7. Wow, what a name. Ranjita is at 8. Naina is at 9. And Tanya is at number 10. All right. Moving on. Next question. Chalo ji. Agla sawal dekhte hain. Let us see the next question. Okay. Okay. What does a ball cost? What does a ball cost? Does it cost 5 dimes? Does it cost 10 dimes? Does it cost 1 dime? Or does it cost 4 dimes? What do you guys think? Mentioned the poem mein. It was mentioned in the poem to 1. The time is up and let us see. The votes are in and the right answer is 1 dime. 1 dime is 10 cents. बच्चे confused हो गए. 10 dimes नहीं होता है. 1 dime is a value of 10 of something. और यहाँ पे क्योंकि अमेरिका के पोएट हैं, so I assumed, it was an assumption that it would be 10 cents because $10 का तो बॉल होगा नहीं, right? So cents का ही होगा, right? So the correct answer is dime. All right. अरे फोकस बच्चा, फोकस. अभी पूरा का पूरा इतने अच्छी तरह से समझाया है मैंने ये पूरा पोएम. गलती कैसे कर रहे हो आप लोग? चलो मूविंग ऑन.
Let us see the next question. All right. So Azam is still at number 1, Abhishek is at number 2, Adya is at 3, Alifia is at 4, Tanya is at 5, Ranjita at 6, Mahika at 7, Bao at 8, Banshika is at 9, and I lost myself is at number 10. All right. Okay, आयुष का गलत हो गया. 10 cents था डाइम. Yes, correct. बिल्कुल सही जवाब. All right. खुशी का भी गड़बड़ हो गया. ओहो हो. देखो डाइम क्या होता है. डाइम इज वैल्यू ऑफ 10. इट कैन बी एनीथिंग. इट कैन बी अ 10 ऑफ एनीथिंग. ठीक है. सो दैट व्हाट इट्स मीन. ऑलराइट, नेक्स्ट क्वेश्चन. Question number 5. Here it comes. How does the child react at the loss? How does the child react at the loss? Stands rigid, trembles, stares. Yeah, all of them. What do you guys think? Remember the lines of the poem. Remember the lines of the poem. Does he stand rigid? Does he tremble? Does he stares? Or all of the above? What do you guys think? Time is about to be over and the time is up. And let us see all of the above. And 17 people have given the correct answer. Yes, he feels rigid. He stands rigid. He's trembling with sadness and anger. And he also stares at the ball. So it is all of the above. So let us see the ranking. Azam is still maintaining his lead at number 1 position. Good job, very good job, Azam. Abhishek Kumar, apna Abhishek is at number 2. Super, Abhishek. Adya, good job at number 3. Tanya at 4. Good job. Alifia is at 5. Hey, sare top 5 close. Not bad. Very, very close. All right. Then Ranjita is at 6. Mahika is at 7. Vanshika at 8. Bao is at 9. And I lost myself is at number 10. All right. All right. Yes, the correct answer is D. बिल्कुल सही जवाब. Arya, it is the right answer. Ashmit, right answer. बिल्कुल, बिल्कुल, बिल्कुल. Khushi, oh ho, your network is not working. कोई बात नहीं बचा. It's okay. You might miss out on a couple of questions. It's fine. Don't worry about it. Even today, my network was also misbehaving, as you must have seen. According to the poet, what is the child learning here? According to the poet, what is the child learning here? To bear loss, to take care of things, to be responsible, or to be careful. ट्रिकी क्वेश्चन है, ध्यान रखना. यहाँ पे पोएट के हिसाब से है, जो पोएम में लाइन लिखा है उससे कंफ्यूज मत हो जाना. व्हाट इज ही लर्निंग हियर? ही इज लर्निंग टू bear the loss, not he feels responsible, but he's not learning to be responsible. He feels responsible. He takes the responsibility of that loss. So what is he learning here? He's learning to bear the loss. And 9 people have given the एकदम सही जवाब. बिल्कुल सही जवाब. All right. All right. Hello सपना, how are you बच्चा? Hello. All right. कोई बात नहीं, कोई बात नहीं. जिन लोगों का गलत हो गया भाई, देखो ये जो है ये रिविजन मेंटी है. इसके बाद हम लोग बहुत सारे और एमसीक्यू सेशंस करेंगे. Get your facts correct through this Menti. If you're making mistakes, now is the time for you to rectify those mistakes and make sure that you don't repeat them. All right, it's okay. Don't worry about it. चलो, बहुत सारे एमसीक्यू सेशंस होने वाले हैं. टर्म 1 से पहले तो एमसीक्यू के मैराथन होने वाले. So moving on. Moving on. Azam is still at number 1. Tanya has climbed up to number 2. Alifia is at number 3. Mahika at 4. Abhishek at 5. Adya is at 6. Bao is at 7. Annie is at 8. Annie Droid. Wow. Android ho kya? Return of the Legend is at number 9. And Ranjita is at number 10. All right. Khushi, your network is very bad. I can understand. It's understandable. बच्चा कोई बात नहीं. जो हो सकता है attempt वो करना. Don't worry about it. It's all right. You can, I know that you always participate and you are one of the good students. Don't worry about it. ठीक है? Try to fix your network if possible. Does the poet condole the boy? What is the meaning of condole? मतलब condole का मतलब होता है sympathize. Does the poet sympathize with the boy or give sympathy to the boy? Can't say yes or no. Simple question है. अगर poem का explanation समझ में आया है, मैंने ये बताया था. I had told this while we were doing the explanation just a bit. Oh ho. बराबर बराबर बराबर. Can't say 3 लोग. Yes. नहीं. He does not condole the boy. He does not sympathize with the boy. He does not want to intrude. वो intrude करना ही नहीं चाहता है. क्यों? क्योंकि the poet wants the boy to learn from this experience on its own. और अगर वो उसको वो cushion देंगे poet, या वो उसको comfort देंगे, वो उससे sympathize करेंगे, तो फिर कहाँ से वो full experience ले पाएगा इस loss का? So that is why the poet does not condole the boy. All right. आयुष काफी आंसर गलत हो गए बच्चा आपके. कोई बात नहीं. Yes Ashmit, the correct answer is no. बिल्कुल सही जवाब. All right.
moving on. Come on, Ayush, don't be a spoiled sport. Be a participant till the competition is over. This is not a good thing. And आयुष, अगर आपको समझ में नहीं आया है, यहाँ पे तो आपके मिस्टेक्स ही दिख रहे हैं ना. ये तो रिवीजन मेंटी है. आपको क्लियर हो जाएगा. आगे अगर आप जाओगे कभी, आपको फिर दोबारा इस पोएम का मेंटी देना होगा, तो फिर आपको एटलीस्ट समझ में तो आएगा कि कहाँ कहाँ गलती की. अगर आप बीच में छोड़ के भाग जाओगे तो फिर आपको कभी आपकी मिस्टेक्स ही नहीं रिजॉल्व होंगी. So I don't think that you should go. The choice is yours. You can take your call, but I strongly suggest that please stay till the end of the Menti. All right, Azam is killing it at number one. क्या बात है Azam? Superb job बच्चा. Tanya is at number two. Alifia, good job at number three. Adya is at number four. Bao is at number five. Annie is at number six. Mahika at seven. Samyukta has made her way to the top 10 ranking. Good job, Samyukta. Abhishek is at 9. Come on, Abhishek, top पे जाओ और ऊपर जाओ. And Return of the Legend is at number 10. All right. तो क्या हो गया? गलती तो हो गया है ना? चलो. Don't be sad. Same is happening with me. Yeah, you learn. That's all you do. Hello, Godzeus. Welcome to my session. A little late though. All right. Next question. Here comes the next question. What does in the world of possessions mean? ये जो लाइन है in the world of possession, इसका मतलब क्या है? मैंने आपको समझाया था ये भी मैंने आपको समझाया था. Does it mean love? Does it mean materialistic thing, materialistic world? या does it mean none of the above? ध्यान से सोचो, ध्यान से सोचो. Yeah, the world of possession. When I was explaining the poem back then, I had absolutely explained it in detail. It had to do with something about possessions, about things, गाड़ी, घर. कुछ example दिया था. Time is up. 11 people have given the correct answer. All right. 11 people have given. All right. You are a new student. God's ears. Welcome to my session and I hope to see you regularly. All right. That's all I can say right now. I hope that आप regularly आओ तो फिर और मजा आएगा. चलो आगे देखते हैं भाई. अभी भी आजम ने अपनी लीड बनाई हुई है at number 1 position. Tanya is at a close number 2, काफी close. Azam, oh no, wait. The rankings have toppled. Tanya is at number 1 position now. Alifia is at 2. Azam has climbed down to number 3. Adya is at number 4. Bao is at 5. Annie Droid is at 6. Mahika at 7. Samyukta at 8. Ranjita at 9. And Aman is at number 10. All right. We've seen some new faces and a new person on the number 1 ranking. Guys, 2 questions left. Jaldi, don't waste time. Next question. And remember, the winner and the runner-up they both get the certificates from me. All right. Name the literary device used in And No One Buys a Ball Back. Focus. Buys a ball back. ठीक है? Is it metaphor, simile या alliteration? Buys a ball back. बहुत बड़ा clue दे दिया मैंने. काफी बड़ा clue है. I hope that you get it. All right. Moving on. Time is about to be up and let's see. And it is alliteration and 10 people have gotten it absolutely correct. Yes, buys a ball back. So the B sound, it has been repeated thrice. That is what it's showing right now. And let us see who is at the top till now. And Tanya is maintaining her number 1 position. Alifia now is at number 2. Adya is at 3. Annie is at 4. Samyukta is at 5. Azam 6. Bao 7. Ranjita is at 8. Aman is at 9. And Mahika is at number 10. All right. काफी ऊपर नीचे हो गया रैंकिंग. All right. Last question, boys and girls. Best of luck. All the best. Here it comes. Repetition means it's alliteration. The repetition of that sound, Arya, that means it's alliteration. Yes. Why does the poet decide not to condole the boy? Why does the poet decide not to condole the boy? He is busy. He is indifferent. Indifferent मतलब poet को कोई फर्क नहीं पड़ता. Yeah, it will be of no use because the loss of that ball will never be replaced by another ball. Simple. Time is up. Let us see the answer. And 11 people have given the correct जवाब. जी हाँ, it will be of no use because एक बार जो चीज चली गई है वो दोबारा आ नहीं सकती है. उस लॉस से, एक्सपीरियंस से सिर्फ स्ट्रॉन्ग ही बन सकता है वो बॉय. तो फिर the poet does not decide to condole the boy. It's very simple as that. The poet wants that boy to learn and grow stronger from this experience, and that's the reason it will be of no use is the correct answer. And now let us see the leaderboard and let us see who has won. Boys and girls, be ready with your congratulation comments in the message section. And we have a winner and Tanya is the winner. Good job. Tanya, good job. You are the champion of this particular poem's Menti competition. Take a bow. Good job, yaar. बहुत ही सही. Adya, you too. First runner-up, good job. And of course, all the top 10 people, whoever, were there in the top 10, good job to you guys also.
So we have a clear winner. I'm going to take the screenshot, and Tanya and Adya, you both will be receiving the certificate on the Telegram group of this particular YouTube channel's Telegram group link. All right, you know the name of the channel is although CBSE 9th and 10th, CBSE class 10th, but the Telegram group is still named just 9th and 10th. वहां से आप आके collect कर लेना अपना certificate. So boys and girls, on that note, we have come to the end of this session. ठीक है, I hope कि the ball poem is now complete and clear in your head. Now we will do a combined revision of all the 4 poems because I have already covered, the other 3 poems. वो already cover हो चुके हैं. Wind is covered, the Tiger in the Zoo is covered, and which was the other one? The road. अरे भूल गया. Robert Frost वाला जो poem है, that is also being done. So now we have completed. Now we have completed all the poems. Yes. Term 1 के सारे poems. The road not taken. Oh my God, yes. The road not taken. ठीक है. So boys and girls, I will see you now at 6 p.m. for class 9 students. All right, on CBSE class 9, and we are going to do past tense. Yes, all the 4 different types of past tense. Sub explain कर दूंगा. जल्दी मिलता हूँ. I'll see you within 3 minutes there.